गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है तो वो देखा था, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे हमने प्रूव किए थे। यस, तो आज के लेक्चर के अंदर हमको उसका नेक्स्ट टॉपिक देखना है, क्योंकि जब हम मोशन एंड प्लेन के बारे में सोचते हैं तो ऑल द मोशंस और ऑल द कैटेगरीज ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन। ठीक है, जब पार्टिकल एक ही प्लेन के साथ सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही प्लेन के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम मोशन इन प्लेन बोलते हैं। when the motion of the particle is confined to the plane only, then or its trajectory completely lies within a plane, it is called as the planar motion or motion in plane we can say. तो अभी उसमें हमने उसका एक एग्जांपल देखा था, ठीक है ना। मोशन इन प्लेन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब कोई भी पार्टिकल जब हम थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ है तो वो पाथ के अंदर के सारे पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उससे एक प्लेन ही बनता है। देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इस तरह से पार्टिकल जा रहा है और यहाँ पे अगर गिर गया तो ये सारे जो पॉइंट्स है उन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा एक प्लेन हमको मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ प्लेनर मोशन, बिकॉज जो जो वर्टिकल प्लेन के अंदर उसका मोशन हो रहा है इसलिए उसको हम बोलेंगे प्लेनर मोशन। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्लेनर मोशन, नो डाउट। On the other hand, there is another motion called as the circular motion, uniform circular motion. Okay, which is we have to study as a next in this chapter here. So basically, whenever the particle performs circular motion, अभी देखो circular motion के examples क्या है, ठीक है। If suppose we take a string and tie a stone with it, and suppose another end of the string is in our hand, and suppose we go on revolving it like this, so the particle will move in a circle like this. तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर वो मूव करेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स है उन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमको एक प्लेन मिलेगा, देखो, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। एंड सिंस दैट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल वी कैन कॉल इट एज अ प्लेनर मोशन। इवन अगर सपोज कोई पार्टिकल को अगर हम स्ट्रिंग के साथ अगर बांध के अगर इस तरह से वर्टिकल सर्कल में भी अगर घुमाते हैं, ठीक है ना, गोल गोल इस तरह से अगर वर्टिकल सर्कल में भी घुमाते हैं तो भी उसका जो मोशन है वो प्लेनर मोशन हो जाएगा। सिर्फ ये फर्क ये है कि उस समय जो उसका प्लेन है वो प्लेन वर्टिकल रहेगा, बिल्कुल उतना ही फर्क है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लेनर मोशन, एवरी सर्कुलर मोशन is a planar motion, remember. So circular motion is a special type of planar motion we can say, and the detailed study of circular motion is to be done in this section which we are going to study now. ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो वो सर्कुलर मोशन के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है। चलो फिर अभी, सो लेट अस गो टू द बोर्ड। Okay, so let us see what is circular motion, and actually how what are the basic things we have to understand in case of this circular motion। ठीक है, तो let us see uniform circular motion। Okay, first of all, let us define what is circular motion। See here, the circular motion is the motion of the particle along the circumference of the circle. Remember, I'll repeat again. The motion of a particle along the circumference of a circle is called as the circular motion। It's a very broad concept and simple to understand। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कमफ्रेंस के अलोंग जब मूव करता है तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, नो डाउट। अभी सर्कुलर मोशन जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है देखो ठीक से।
तो उसमें आ जाता है सपोज द मून इट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो वो भी एक तरह से सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. सपोज दिस इज द अर्थ and suppose this is moon which is revolving around the earth in a circular orbit in this way like this. Even nucleus एटम के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं. कोई फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई सेकंड ऑर्बिट में घूमता है, कोई थर्ड ऑर्बिट में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. So accordingly we can see the different number of electrons revolve in a circular orbits around the nucleus. This is again an example of circular motion. We'll see. So all these are the examples of circular motion. Even fan जो होता है, fan, ठीक है, suppose fan के जो blades होते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लेड के टिप वाला पॉइंट जो है, तो उसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो हम देख सकते हैं आराम से. सपोज दिस इज द टिप पार्टिकल. Okay, this is the fan, and suppose when it rotates, what happens is all the particles of the blades will just try to revolve in a circles. तो देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, ए पॉइंट उसको नाम देते हैं सपोज. So this A point will move in a circular path like this. तो इस तरह से वो circular path में घूमेगा. ठीक है, तो फैन का every particle of the blade of the fan just revolves in a circle of different radii. तो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में वो घूमते हैं. जो पार्टिकल नजदीक होता है तो उसका रेडियस कम होता है, और जो पार्टिकल दूर होता है तो उसका रेडियस ज्यादा होता है. तो हर एक पार्टिकल का रेडियस जो है वो अपना अपना अलग अलग होता है. ठीक है, it is the distance of that particle from the center, no doubt. So we have understood that every particle of the fan moves in a circular motion. It moves along the circular path whenever the fan rotates about its axis. और spinning top के बारे में भी हम बोल सकते हैं आराम से. ठीक है, whenever it is set into rotation, suppose this is spinning top, देखा होगा तुमने, तो this will be revolving around the in a circular path. So when it revolves, what happens is every particle of this spinning top just revolves in a circle. तो ये हर एक पार्टिकल का जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. तो हम देख सकते हैं आराम से. आई विल रिपीट अगेन द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. द simply the motion of the particle along the circumference of a circle is called as the circular motion. Okay, now we understand the types of circular motion. What are the types of circular motion? See here, there are two types of circular motion. One is the uniform circular motion. It is denoted by UCM. Okay, UCM, U का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, and CM का मतलब circular motion, no doubt. चलो ठीक है. And on the other hand, we have this another type of motion which is called as the non-uniform circular motion. Okay, it is denoted by non-UCM. Okay, अब देखो ठीक से, UCM और non-UCM इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है समझो ठीक से. When we call UCM, uniform circular motion, what happens in this case is, देखो ठीक से, अगर सपोज ये सर्कल है जिसके अलावा ये पार्टिकल ट्रैवल करने वाला है, यहाँ से वो पार्टिकल सपोज स्टार्ट करता है. ठीक है, तो होता ऐसा है ना कि फर्स्ट सेकेंड में, एक सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल अगर सपोज एक 45 डिग्री या 30 डिग्री एंगल कवर करता है, ठीक है, तो सेकेंड में उतना ही एंगल कवर करेगा. बिल्कुल, तीसरे सेकेंड में फिर से उतना ही एंगल कवर करेगा. देख रहे हो ठीक से, ये सभी एंगल्स जो है वो कांस्टेंट है. ये इवन चौथे सेकेंड में फिर से उतना ही एंगल वो कवर करेगा. देख सकते हो ठीक से, ना ज्यादा ना कम. बिल्कुल. तो in the same way we can see clearly that the particle will go on tracing the equal angles in equal intervals of time, and that's why it's called as a uniform circular motion. देखो ठीक से, तो uniform circular motion का खासियत क्या है? The particle covers same angle in same intervals of time. Equal angles are covered after equal intervals of time, and that's why it's called as a uniform circular motion. Remember. Okay, on the other hand,
we have this non-uniform circular motion. What is it? How it is different from this uniform one? तो देखो ठीक से, suppose this is a center and suppose the particle starts from this point A here, okay? A point से वो start करता है. तो suppose एक सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में अगर ये पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल कवर करता है, तो वो हम यहाँ पे थीटा से डिनोट करेंगे उसको. चलो ठीक है. अभी सेकेंड में अगर देखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा एंगल कवर करेगा. दिख रहा है ठीक से? देखो तीसरे सेकेंड में क्या हो रहा है, और ज्यादा एंगल कवर कर रहा है. चौथे सेकेंड में और थोड़ा ज्यादा एंगल कवर कर लिया. पांचवें सेकेंड में और ही ज्यादा एंगल कवर कर रहा है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये देखो फर्स्ट सेकेंड में इतना एंगल कवर कर लिया, सपोज 30 डिग्री एंगल कवर कर लिया. नेक्स्ट सेकेंड में क्या हो रहा है, 40 डिग्री एंगल कवर कर रहा है. ओके, और आगे जाके 50 डिग्री एंगल कवर कर लिया. ओके, नेक्स्ट सेकेंड में उसने 60 डिग्री इतना एंगल कवर कर लिया, और आगे जाते 70 डिग्री इतना एंगल कवर कर लिया. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो वो उसका जो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम है, एंगल कवर्ड इन सेकेंड, 1 सेकेंड है, वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, देखो पहले सेकेंड में ये एंगल कवर किया, ये दूसरे सेकेंड में इतना एंगल कवर किया, ये तीसरे सेकेंड में कवर किया, ये चौथे सेकेंड में कवर किया, ये पांचवें सेकेंड में. तो इस तरह से ये जो एंगल्स है ये एक दूसरे से ज्यादा है, राइट है. तो इसलिए हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे जैसे एंगल, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे वो ज्यादा ज्यादा एंगल कवर करता जाता है. एंड दिस हैपेंस एंड इन केस ऑफ द non-uniform circular motion. Remember, so non-uniform circular motion is one in which the particle covers different angles in equal intervals of time, whereas in the case of uniform circular motion, the particle covers same angle in equal intervals of time. Suppose first second में इतना angle cover किया, second, third second, fourth second, every second the angle covered in those that second is going to be the constant in all the intervals. करेक्ट है? तो कितना भी टाइम गुजर जाए, एक सेकेंड में उसके द्वारा कवर किया हुआ जो एंगल है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, इस तरह से. तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? What is the uniform circular motion and how non-uniform circular motion is different from this? So here, in case of the uniform circular motion, we can see the particle moves with constant speed. बोल सकते हैं ऐसा? देखो कांस्टेंट स्पीड के साथ ये पार्टिकल मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड, रिमेंबर. बट हियर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड. ओके, वेरिएबल स्पीड. द पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है, कम ज्यादा हुआ करता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्पीड थोड़ा कम था, बाद में चल के बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. रिमेंबर. Okay, what are the daily life examples of uniform circular motion? Yes, just we have talked about few seconds before that the uniform circular motion के अंदर कौन से examples आते हैं? When moon revolves around the earth in a circular orbit, that motion is the uniform circular motion. Yes, just because moon takes the same time to complete one circle, right? या ऐसा कभी होता है कि एक सर्कल तो कंप्लीट हो गया, अभी अगला चक्कर काटने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा उसको या कम टाइम लगेगा? कभी नहीं होता है. या इवन अर्थ व्हेन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सपोज दिस इज द सन एंड सपोज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit, we can see clearly that the earth requires 365 days to revolve completely once around the whole orbit. तो पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 डेज लगते हैं. ठीक है, अब ये सोचो, क्या कभी ऐसा होता है कि एक चक्कर काटने के लिए उसको 365 डेज लगे, फिर दूसरा चक्कर काटने के लिए 366 डेज लगे, या तीसरा चक्कर काटने के लिए 367 डेज लगे? ऐसा तो कभी होता नहीं. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a circular orbit, it's an example of uniform circular motion because the speed of the earth remains constant, it doesn't change. Okay, but on the other hand, what are the examples of non-uniform circular motion then? Can you give any non-uniform circular motion का example क्या है? देखो, suppose there is a fan. Okay, it has 3 blades like this, and suppose when it is switched on, okay, अभी वो पहले बंद था,
अभी जैसे ही उसको हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसके बाद क्या होगा, पहले उसका वेलोसिटी 0 था, एंगुलर स्पीड या उसका स्पीड 0 था, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। दिखते हो ठीक से? तो पहले स्टार्टिंग में वो जो एंगल्स है, तो 1 सेकेंड में सपोज 30 डिग्री कवर करता जाएगा, लेकिन और आगे जाने के बाद, थोड़ा टाइम आगे जाने के बाद ऐसा होगा कि एक एक सेकेंड में वो 60 डिग्री एंगल कवर करने लगेगा। और थोड़ा आगे बढ़ो तो पता चलेगा कि एक एक सेकेंड में 90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, राइट? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड एक्चुअली, ये हमको आगे चल के देखना ही है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड at some particular point what happens is its angular speed becomes constant, it remains constant, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो फुल स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से मूव करने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। तो तभी उसको हम बोल सकते हैं कि its motion is uniform. When its speed becomes constant, then its motion becomes uniform. But so far as its speed has not become constant, the motion of the fan will be called as a non-uniform one, because in that case the speed of the particle is going to increase time by time, instant by instant, and that's why the speed of the particle is variable, and that's why we can say that it's an example of non-uniform circular motion. When the fan is just switched on, unless and until it acquires its maximum speed, the motion of the fan can be supposed to be non-uniform. Okay, even ये देखो, अगर फैन को स्विच ऑफ कर दिया, मान लो कि एक फैन जो है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसके बाद हमने तुरंत उसको स्विच ऑफ कर दिया। जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो उसके बाद क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, बहुत हाई स्पीड होगा, लेकिन धीरे 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 उसका स्पीड जो है वो कम 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 होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो इस तरह से उसका स्पीड कम कम हो रहा है, तो उस केस में फिर से हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिमेंबर। तो नॉन यूसीएम इसको कहा जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूसीएम, रिमेंबर, व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन और द फैन इज स्विच्ड ऑफ, but already fan is switched on and after a long time it will continue to move with the same constant angular speed or speed, and that's why it's called as a uniform circular motion, remember। तो ये सब जो एग्जांपल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये इवन और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। देखो ठीक से, सपोज एक व्हीकल है, देखो ठीक से, सपोज देयर इज अ व्हीकल and it is moving along the curved road like this, ये कर्व्ड ट्रैक है इस तरह से, और दूसरा एक व्हीकल है हमारे पास, वो भी उसी कर्व ट्रैक के ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे A और इसको बोलेंगे B, चलेगा? देखो, if you consider this vehicle A here, then the vehicle is moving along the curved line से या कर्व्ड रोड से वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे इस तरफ रहेगा और यहाँ पे इस तरफ। तो वेलोसिटी तो चेंज होता जा रहा है, टर्न होता जा रहा है, लेकिन उसने अगर देखा तो यहाँ पे उसका जो स्पीड है, स्पीड जो स्पीडोमीटर में हमको दिखता है, वो स्पीड उसका यहाँ पे सपोज 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसका स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी उसका स्पीड 50 है और यहाँ पे भी 50 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, नो डाउट। Okay, at the another on the other hand, suppose there is another vehicle which is traveling on this curved road, but if we measure its speed at this point here, point B here, then it is suppose 40 kilometer per hour. Okay, suppose that it goes to the point here, इस पॉइंट पे जब वो जाता है तो उसका जो स्पीड है, जो स्पीडोमीटर में हमको दिखता है, वो सपोज 50 किलोमीटर पर आवर बन गया, और थोड़ा आगे जाने के बाद जब वो यहाँ पे चला गया तो उस समय उसका जो स्पीड है वो मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर बन गया। तो मतलब ड्राइवर क्या कर रहा है, देखो ड्राइवर एक तरफ तो उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो घुमा रहा है, जिसकी वजह से वो टर्न हो रहा है, टर्निंग तो उसको करना ही है, बट टर्न करने के साथ साथ वो एक्सेलरेटर भी दबाए हुए है,
एक्सेलरेटर भी वो दबा रहा है, तो एक्सेलरेटर दबाने के कारण क्या हो रहा है, उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं रहा. तो this type of motion will be called as a non-uniform circular motion. Why? Because while turning, it also press the acceleration, and that's why its speed is going to change at every point. तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जबकि यहाँ पे अगर देखते हो तो स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. इफ यू मेजर द स्पीड एट एवरी पॉइंट, the it is constant, it is 50 kilometer per hour, and that's why we can say that when the speed is constant, is called as the uniform circular motion. But when the speed is not constant, then it is called as a non uniform circular motion. Remember, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया ठीक से? Can you tell me any other example of uniform circular motion? Yes. या मेरी गो राउंड के अंदर जब हम बैठते हैं और जब वो घूमता है, तो एवरी चेयर विल बी रिवॉल्विंग विद द कांस्टेंट स्पीड. ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एनीथिंग एल्स? यस, वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े डालते हैं तो उनका जो स्पीड है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि व्हेन जब वो फिर से घूमता है, फिर से स्टॉप होता है, फिर से घूमता है, फिर से स्टॉप होता है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है. हाँ, लेकिन जब हम स्पिनर के अंदर कपड़े डालते हैं तो एक बार स्पिनर चालू कर दिया, उसके बाद वो हाई स्पीड में गोल 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 घूमता रहता है कई लंबे समय तक. दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वी कैन सी क्लियरली. So this is the basic difference between uniform and non-uniform circular motion. Okay, giant wheel also, very good. Giant wheel. Even you must have been seen about the well of death in the circus. सर्कस में तुमने कभी देखा होगा, मौत का कुआं बोलते हैं उसको, मौत का कुआं. एक ऐसा स्पीयर रहता है और उस स्पीयर के अंदर एक टू व्हीलर ड्राइवर एंटर करता है और पहले ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स लेता है, फिर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में कवर करता है टू व्हीलर से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्टिकल सर्कल्स भी कवर करता है. सो दिस इज एक्चुअली द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, तो चलो ठीक है, एग्जांपल्स तो अभी बहुत हो गए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, नो डाउट. अभी हम देखेंगे इसके अंदर का काइनेमेटिक्स. ओके, सो लेट अस सी द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अब देखो, जहाँ पे काइनेमेटिक्स आ जाता है तो वहां पे तीन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं. तो सबसे पहला कंसेप्ट है, जैसा हमने वन डायमेंशनल लीनियर मोशन या प्लेनर मोशन के अंदर जो भी हमने काइनेमेटिक्स देखा था, तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले तीन कंसेप्ट डिफाइन किए थे. याद होगा आपको, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट. दूसरा फिर हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी, और तीसरा हमने बताया था एक्सेलरेशन, करेक्ट है, एक्सेलरेशन. और ये तीनों कंसेप्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, पोजीशन विच इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, रिमेंबर. So see here, these three are the very important concept in the motion, right? So in the same way here, in case of circular motion also, there are three important concepts called as angular displacement. देखो ठीक से, सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा angular displacement. What is angular displacement? We have to understand. Then again, we have to understand about what is angular velocity. See here, angular velocity. Velocity क्या होता है वो तो हमने देख लिया, बिल्कुल. बट अभी यहाँ पे हमको देखना है angular velocity क्या होता है. और तीसरा हमको समझना है what is angular acceleration. Okay, angular acceleration. Yes. So these are the three concepts which are to be studied in case of circular motion, and all these three concepts depend on a very important concept that called as a radius vector. Remember.
Yes. Okay. So these are the three concepts we have to study in this circular motion. And these three concepts, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration, depends on this basic concept called as the radius vector. Remember, radius vector. Okay. So let us understand what is radius vector. Okay. See here. Suppose this is the circle, and okay, this is the center of this circle, right? And suppose that the particle is at the point A here. This is the position of the particle initially. So at that time, the radius vector will be expressed as, देखो radius vector हम कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमको ये जो है ये सेंटर और उस पार्टिकल का जो पोजीशन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना होगा, ये देखो इस तरह से. So this is called as the radius vector. So actually what is radius vector? The vector drawn from the center of the circle, which is denoted by O here, to the position of the particle. Okay, तो center से position of the particle की तरफ join करने वाला जो vector है, उसको हम बोलते हैं radius vector, और उसको हम denote करते हैं r bar से. ठीक है, r bar is called as a radius vector. Okay, but suppose the particle, when the particle turns or moves from this point A to the point B along this circle, then what will happen is the radius vector will also get turned. करेक्ट है? तो रेडियस वेक्टर जो है तो वो भी इस तरह से टर्न होगा. तो सब जो ये उसका रेडियस वेक्टर का फाइनल पोजीशन हो गया. दिस इज द अनदर रेडियस वेक्टर व्हिच इज एट पॉइंट बी, राइट? ओके, so in this case this is the another radius vector. Now we'll see this is the radius vector. तो radius vector का concept समझा ठीक से. What is radius vector? It is simply the vector drawn from origin of the circle or center of the circle to the position of the particle. तो simply हमको क्या करना है, सर्कल के सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन की तरफ हमको वेक्टर ड्रॉ करना है, and that is called as a radius vector, no doubt. And whenever this particle will move from A to the point B here, what will happen is this radius vector will sweep out some angle of the circle. So this angle subtended by this radius vector will be called as angular displacement. Remember, what is angular displacement? It is the angle subtended or angle described by the radius vector in a given time. It's called as angular displacement. And this angular displacement is always measured in radian. As we know that angle in radian is defined as, angle को कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, बराबर है. सो दिस फॉर्मूला विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस एंगल. सो वी कैन से दैट दिस थीटा, that is the angular displacement, will actually be equal to, if suppose this arc is denoted by s. okay, ये जो arc है वो अगर हमने s से अगर डिनोट कर दिया उसको, तो उसमें हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू arc, that is s, upon radius, that is r. So this is actually the formula for angular displacement, remember. And what is this angular velocity? तो देखो angular velocity कैसे हम ढूंढ के निकाल सकते हैं. Suppose this angular displacement takes place in a time t. okay, t इतने टाइम के अंदर अगर ये angular displacement हो जाता है, तो how can we get that angular velocity? The angular velocity will be expressed as the angular displacement theta per unit time. Remember, so theta upon t is the definition of angular velocity. So we can say angular velocity, उसका फॉर्मूला क्या हुआ? So angular velocity will be defined as
the angular displacement, okay, upon time. In the same way as we have in the linear motion, that velocity is defined as the displacement upon time, correct है? तो ये जो displacement upon time, इसको हम क्या बोलते हैं? Velocity बोलते हैं. Same वैसे ही यहाँ पे angular velocity जो है वो किसको बोलते हैं? Angular displacement upon time. इसको हम angular velocity बोलते हैं. समझा ठीक से? So this is the concept. Okay. And इससे भी आगे जाके ओमेगा जो है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है? और सपोज कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ओमेगा 1 है, ए पॉइंट पे मान लो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, और मान लो कि बी पॉइंट पे जाने के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 2 बनता है, तो इन दैट केस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन will be actually defined as simply the change in angular velocity that is to be divided by time, and this angular acceleration is actually expressed as alpha. तो अल्फा से उसको डिनोट किया जाता है, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट? उसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? देखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. हाउ विल यू फाइंड आउट द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, and that is to be divided by the time. So we can say this will be omega 2 minus omega 1, and that is upon time t. This is actually the formula for finding this alpha, which is nothing but the angular acceleration. Remember, in the same way as we have in the linear motion, that acceleration is equal to, acceleration का formula क्या होता है? Change in velocity upon time होता है कि नहीं? So change in velocity upon time. So and we express it as a, and a is always equal to v minus u upon t. तो जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए है, वैसे ही ये वाला फॉर्मूला हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए है. ओके, सो दिस इज बेसिकली द concept of circular motion. Now understand that what happens in circular motion is there is a concept of period and velocity. देखो ठीक से अभी. So suppose this is the circular motion of a particle, and suppose it starts from this point A here. इस A point से वो start करता है, ठीक है? तो अभी देखो ठीक से, इस पार्टिकल को यहाँ से निकल के, just wait. Yes. Suppose the particle starts from this point A, then the time required for the particle to complete the whole circle here, पूरा चक्कर काटने के लिए जो भी टाइम पार्टिकल को लगता है उसको हम बोलते हैं period of revolution. Remember, it's denoted by capital T. Okay, capital T. What is this? Capital T is called period of revolution. Remember, it is the time taken by the particle to complete one full revolution. Remember, जैसे अर्थ का period of revolution कितना है about the sun? It is 365 days, or we can say 1 year. Okay, no doubt. Even in the same way, we can also find out the period of revolution of earth about itself, which is going to be 24 hours, or 1 day we can say. और even we can see fan भी जब घूमता है तो एक चक्कर कितना टाइम में वो कट करता है, तो उसको हम बोलेंगे उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. इट्स बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल. ओके, दूसरा कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एफ, और कभी कभी उसको एन से भी डिनोट किया जाता है, एन, which is nothing but the frequency of revolution. Remember, what do you mean by this frequency of revolution? Frequency, as its name suggests, is the number of revolutions completed per unit time
अगर मान लो एक फैन जो है, तो वो फैन अगर बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है, तो मान लो कि 1 सेकेंड में वो 3 रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, हम कहेंगे 3 हर्ट्ज. Hertz is the unit of frequency, remember. So the frequency of the fan will be supposed to be 3 hertz when the fan revolves 3 rotations per second. 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस किए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, याद रखो ठीक से, ठीक है. So these are the concepts of period and frequency, remember. Okay. अच्छा, अभी इसके ऊपर इस इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप भी देख लेंगे फटाफट. क्योंकि देखो पीरियड इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि हमने लीनियर मोशन के अंदर देखा है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है, बराबर है, या वी कैन से स्पीड बेटर. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी. स्पीड इज एक्चुअली डिफाइंड एज distance upon time, right? So if we consider the speed of the particle to be v here, then we can say v will actually be equal to what? Distance. How much is the distance covered by the particle in one full rotation? It is 2 pi r. That is the circumference of the circle, correct hai? So this is 2 pi r and that is to be divided by time, that is capital T we can say, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, उसको ही तो हम पीरियड बोलते हैं कि नहीं. तो उस पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हमेशा. सो दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड, दैट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 pi r upon v. This is the formula for finding the period, remember. Okay, and in the same way we can have that angular speed. Angular speed का formula क्या है बताओ. Angular speed is always equal to the total angle described per unit time, बराबर है. जैसा कि अभी अभी हमने देखा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, बराबर. ठीक है, तो एंगुलर स्पीड का ये फॉर्मूला है, तो उससे हम देख सकते हैं आराम से कि ओमेगा विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अभी एंगल ऑफ फुल सर्कल हाउ मच इज इट, अगर ये पूरे सर्कल का जो एंगल है तो वो कितना होता है हमको पता है. अगर डिग्री में दिया जाए तो वो 360 डिग्री हुआ करता है, बट वी डोंट वांट इट इन डिग्रीज, we want it in radian. So 360 degree corresponds to how much? It corresponds to 2 pi radian, correct hai? So if we replace it here, then we can get this as 2 pi as a full angle of a circle, and that is to be divided by the full time, that is the time of period of revolution of this circle. So ये जो capital T है वो हमको यहाँ पे रखना है नीचे डिनोमिनेटर में, जिससे हमको मिलता है 2 pi by capital T, where T can be transferred to that side, so as to get this T once again becomes equal to 2 pi by omega. This is another formula for finding the period in terms of omega, and this is one of the formula for finding the period in terms of velocity, remember. And what about the frequency? See here, what do you mean by frequency? The frequency is the number of revolutions per unit time, and period is nothing but the टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. देखो पीरियड के डेफिनेशन से ही हमको पता चलता है कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, मतलब टाइम को हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट है. तो इससे हमको पीरियड मिलेगा, नो डाउट. अगर फॉर एग्जांपल अगर तुमको दिया है कि एक फैन 60 सेकेंड्स के अंदर अगर 20 रिवॉल्यूशंस करता है, देखो ठीक से, तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे. देखो 60 सेकेंड्स के अंदर 20 रिवॉल्यूशंस, मतलब एक रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में करेगा, वो 3 सेकेंड में करेगा. ये 3 सेकेंड क्या हो गया, उसका पीरियड हो गया, राइट. तो पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम को मतलब 60 सेकेंड्स को डिवाइड किया 20 रिवॉल्यूशन से, बराबर. तो इसलिए टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिव अस द पीरियड, बराबर. ठीक है, अभी ऑन द अदर हैंड यू कैन सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, चेक करो ठीक से. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम करना होगा. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
made per unit time is actually called as the frequency. ये उसका definition ही है. तो देखो n का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम हो गया, और पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया. तो can't we see that these two are just reciprocals of each other? यहाँ पे देखो इसमें टाइम न्यूमरेटर में है जबकि इसमें टाइम डिनोमिनेटर में है, देखो ठीक से. और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस न्यूमरेटर में है. तो frequency and period are always reciprocals of each other. So we can say that frequency n is always equal to 1 upon t and t is always equal to 1 upon n. This is the relationship between the frequency and period. They are always going to be reciprocals of each other, remember. So once we get the formula for period, we can easily get the formula for frequency also. So what is the formula for frequency then? n is equal to just reciprocal of this period. जस्ट उल्टा करो उसको, v ऊपर लेके जाओ, 2πr नीचे लेके जाओ, तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा जो बनेगा v upon 2πr. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन in case of circular motion. And here the time period is equal to 2 pi by omega भी तो होता है, तो इससे हमको फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा. इसको भी उल्टा करो तो वो बनेगा ओमेगा अपॉन 2 pi. This is another formula for finding this frequency. And using this formulae, both of these formulae, we can express omega in the two terms. तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं इसमें से, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, तो ओमेगा का ये एक फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, नो डाउट. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. बट एट द सेम टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला we can get another expression for omega, that is omega is equal to 2 pi n, where n is the frequency. So we can get the angular velocity of the body if its frequency is known, remember. चलो ठीक है. So these are some equations or some formulae in this chapter. Okay, see what we have done today. Once again, we have seen the circular motion, concept of circular motion. The motion of the particle along the circumference of a circle is called as circular motion, right? After that, we have seen the three concepts: angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. First of all, we have seen the angular velocity. Sorry, angular displacement. What is angular displacement? See here, angular displacement से भी पहले हमने क्या किया, रेडियस वेक्टर के बारे में देखा, राइट? रेडियस वेक्टर. What is radius vector actually? Sorry, radius vector is nothing but the vector drawn from the center of the circle to the position of the particle is called as radius vector. Okay, and when the particle goes on moving from one point to other point, this radius vector go on changing its position and describes some angle as it moves further. So यहाँ पे ये उसने इतना एंगल कवर किया, या उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पे. तो समझो फर्स्ट इसमें इसने इतना एंगल कवर किया, फिर यहाँ पे इतना एंगल कवर किया, फिर इतना एंगल कवर किया. तो as the particle goes on moving away from the origin or starting point, it goes on covering the angles, more and more angles from the center, and that angle covered per unit time is actually called as, okay, so the angular displacement per unit time is called as angular displacement, or sorry, angle covered by the radius vector in a given time. तो इस given time के अंदर जितना भी वो angle cover करता है उसको क्या बोलते हैं हम, it's called as the angular displacement, but it should be measured in radian. So its formula is theta is equal to s upon r, that is arc upon radius, no doubt. And angular velocity, how this angular velocity is defined? The angle covered per unit time, angular displacement upon time, is called as the angular velocity. And how this angular acceleration is defined? Angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time. That is called as the angular acceleration, which is denoted by alpha, and it is found out as omega 2 minus omega 1 upon t. Okay, ये हमने देखा. और उसके बाद ये भी देखा what is period.
and what is frequency. So we have seen that period is nothing but the total time taken by the particle to complete one full revolution. It's called as the period of revolution. And the number of revolutions per unit time is called as the frequency of revolution. And using this formula, that speed is always equal to the distance upon time. तो v is equal to क्या हो गया 2 pi r upon t हो गया, जिससे हमको t is equal to 2 pi r upon v ये फॉर्मूला मिलता है. और एंगुलर स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो इसमें से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज द फुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी. इससे हमको ये फॉर्मूला मिल गया. और यूजिंग दिस वी हैव फाउंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. करेक्ट है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीरियड in terms of omega, and using this reciprocal of this period, it's the frequency. So frequency का भी formula आपको मिल गया. Frequency n is equal to v upon 2 pi r, or n is expressed as omega by 2 pi. So these are the formulae for frequency we have found out. Yes, so this is all about the today's content you have to do. Yes, in the next lecture we'll see the details of uniform circular motion, and also we have to see some numericals based on the same formulae. तो आज जो हमने फॉर्मूले देखे हैं तो उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमको देखने हैं. तो उसके लिए आज के जो फॉर्मूले हैं वो ठीक से रिवाइज करके रखो और लर्न करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आए. ओके, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. Thank you all of you.